हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो आज हम उसमें कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड द व्हाट रियल गैस। सो ये जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आइडियल एंड गैस एंड द रियल गैस, वो समझेंगे थ्रू द different parameters. So again, so what is a real gas? It is the what gaseous compound that really exists in the environment. And what is the ideal gas? It is a hypothetical gas which does not exist in the environment. So यहाँ पे क्या gaseous compound really exist in the environment. Really exist in the environment. Okay, an ideal gas is a what? Hypothetical gas. Hypothetical gas does not exist in the environment. Does not exist in the environment. So this is a first basic difference. Second difference is what? About the intermolecular force of attraction. So bachcho, in case of real gas, this intermolecular force of attraction is present between the gas molecules, and in this case it is does not present between the gas molecules. So intermolecular force of attraction present between gas molecules, यहाँ पे does not present between, we can say that, ideal gas particles. Okay, this is the what? Second difference. Now next, third parameter is what? Mass and the volume. So bachcho, whenever we talking about the real gas, so real gas particles have the definite mass and the volume, but whenever we talking about the ideal gas particles, they do not have the definite mass and the volume. So यहाँ पे real gas particle, so can I directly write mass and volume? So real gas particles have definite mass and volume, have definite mass and volume. और यहाँ पे ideal gas particles don't have definite mass and volume. Definite mass and volume. ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं बच्चों, टाइप ऑफ कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक, then inelastic and the perfectly inelastic collision. So whenever we talking about the real gas, in that the type of collision between the gas molecules is the what? It is the non-elastic collision is present. Non-elastic collision is present between the gas molecules of the real gas. And whenever we talking about the ideal gas, here the type of collision is what? Elastic collision is present between the gas molecules. Elastic मतलब where the kinetic energy and momentum both are conserved. Okay, ठीक है। Now next parameter is the what? Next parameter is the what? The kinetic energy of gas particles. So whenever we talking about the real gas, the kinetic energy of gas particle is not constant. It is changed because of the collision, and हमने देखा कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स चेंजेस बिकॉज ऑफ नॉन इलास्टिक कोलिजन, बिकॉज ऑफ नॉन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स, बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना बच्चों, डिफरेंस के थ्रू समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। मतलब कि बाबा व्हेन रियल गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, नहीं तो वेन एवर द आइडियल गैस विल बिहेव लाइक अ रियल गैस। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल कि आइडियल गैस
behave as a real gas at low pressure and high temperature. And so, and whenever we are talking about the ideal gas behave like behaves like real gas at इसके opposite high pressure and low temperature. At high pressure and low temperature. ठीक है. So बच्चों, these are the various points through which we can understand the basic difference between the real gas and ideal gas. तो fast revise करेंगे. First difference था existence in the environment. So real gas, these are the gaseous compound actually or really exist in the environment. Whenever we talking about the ideal gas, these are the hypothetical gas, does not exist in the environment. Second difference is the intermolecular force of attraction. यहाँ पे in real gas it is present between the gas molecules. यहाँ पे it does not present between the gas molecules. Third difference is what? Because of mass and volume. So real gas particles have the definite mass and volume. Ideal gas particle does not have the definite mass and volume. Next, type of collision present between the gas particles. So in case of real gas, it is a non-elastic collision. In case of ideal gas, it is a elastic collision. The next difference, kinetic energy of gas particles, it changes because of what? Non-elastic collision. And in case of ideal gas, the kinetic energy remains constant because of elastic collision. And last difference, the pressure and temperature condition, that is when ideal gas. So sorry बच्चों, अच्छा हुआ यहाँ पे समझ में आया. So यहाँ पे now see, correct करवाओ. Real gas behaves as an ideal gas at low pressure and high temperature. और यहाँ पे ideal gas behave like a real gas at high pressure and low temperature. तो ठीक है. सो होप सो आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस समझ में आया. सो इफ यू लाइक द वीडियो, डज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.